Namaste everyone. Welcome to our favorite channel for learning math and science, Magic Education. Let's resume the topic rational and irrational numbers, and we were looking at exercise 1.4. So today let's look at first of all the basics of irrational numbers. When you hear the term irrational numbers, what should come to your mind? First is people use this word irrational matlab something which is a bit illogical, literal translation, or not so easy to understand. ये है इसका इंग्लिश मीनिंग. ठीक है, अब चलते हैं टुवर्ड्स द मैथमेटिकल सेंस. सो आई जस्ट क्लियर इट एंड टॉक अबाउट दैट. नाउ वी ऑल हैव seen Pythagoras theorem, बराबर. What does the Pythagoras theorem say? Can someone tell me in chat, in comments? Pause करो और कमेंट में लिख दो. Great. It says hypotenuse square equals to side 1 square plus side 2 square. And what kind of triangle did you use to make it? Yes, we make the use of a right angled triangle. This is called as hypotenuse, side 1 and side 2. Okay, fabulous till here. Great. Now, I have a small question to ask. If I make a right triangle with the following dimensions, 1 unit and 1 unit. This is 1 unit and this is also 1 unit. What do you think would be the length of the hypotenuse? Let's find it out. Let me mark the hypotenuse as h. So what I have is h square is equals to 1 square plus 1 square. So h square is equals to 1 plus 1. So what you have is h square is equals to 2. But we don't need h square is equal to 2. We need h. So हम क्या करते हैं, हम एक basic simple step करते हैं, which is called as taking square root of both sides. So इसमें हम क्या करेंगे, a square root sign here, a square root sign there. One for h square and one for 2. So if you see on the left, h square का square root and square कट जाएगा. So यहाँ पे बचेगा सिर्फ h और वहां पे बचेगा root 2 units. Now take a pause and think, do we know the value of root 2? So answer is, it's quite tricky to find the value of root 2. Let's do an attempt. एक attempt करते हैं. So let me clear this to make an attempt for that. There is something called as long division method for finding square root. तो यहाँ पे है मेरे पास एक 2, उसके बाद decimal point, उसके बाद zeros की pair, 0 की pair, zeros की pair. And what do I do with it? I start doing long division. How do we do that? It's very simple. For long division, हमारे पास एक criteria होता है. We can only use like squares for the first one. 1 ones are 1, 2 square 4, 3 square 9. So something like that. So if I use 1 square 1, okay, I'm good to go. But if I use 2 square 4, it becomes big. So my options remain is 1, 1, 1s are 1. Remains 1 becomes 100. ओके अब लेफ्ट साइड पे कुछ डिफरेंट होता है. यहाँ पे होगा प्लस और ये बनेगा 2. नाउ आई हैव टू थिंक ऑफ द नंबर विच विल कम आफ्टर 2. आई हैव टू थिंक ऑफ द डिजिट विच विल कम आफ्टर 2. सो टू डू दैट अगेन आई एम ऑब्लिगेटेड to use only 21
into 1, that is 21. 2 के बाद 2, 22 into 2. So you can see मैं 2 को टच नहीं कर सकता, बट जो नेक्स्ट डिजिट है मैं उसको 0 से लेके 9 तक कुछ भी यूज कर सकता हूँ. So 23 into 3, that gives us 69. 24 into 4, we get as 96. 25 into 5, 125. बड़ा हो गया. So 25 into 5 not useful, but 24 into 4 definitely useful. 24 4s are 96. यहाँ पे हो जाएगा addition. So what I have is a 4 and the zeros drop down. So this becomes 400. यहाँ पे हो जाएगा 28. अभी आगे के लिए we have to use the same technique. We have to think of the digit after 28. Okay, I can have the choice from 280 into 0 to all the way till 289 into 9. I have so many options. तो मैं 280 के बाद 281 into 1 जैसे ही करता हूँ, I get 281. And if I do 282 into 2, I get 564. Oh, I should use 1. 281 into 1, I get 281. And here 1, here becomes addition of 282, digit to think after 2. And here subtraction हम थोड़ा methodically करेंगे. कैसे? 4 becomes 3, this becomes 10, but it has to carry. So this becomes 9, so you become 10. So what you have is a 9, what you have is a 1, you have is a 1, and then you have is a 0, 0. Now you have to think of the next one. जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, आप रियलाइज कर रहे हो कि हमारे लिए सोचना और कठिन होते जा रहा है. सो मैं आपको एक स्मॉल शॉर्टकट सिखा सकता हूँ, वेरी सिंपल. अब आप देखिए, फर्स्ट डिजिट है 2, उसके बाद कितने डिजिट्स की पॉसिबिलिटी है? 8, 2 और जो हमें सोचना है. सो कितने हैं टोटल? 3. सो मैं इन तीनों को थोड़ी देर के लिए छुपा देता हूँ, आप भी छुपा सकते हैं. अगर 3 छुपाए हमने, कैसे? 8, 2 और एक अननोन, वैसे ही हम 3 यहाँ पे भी छुपा देंगे, 9, 0 और 0. समझ में आ रहा है? अब हमें क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है और 11 दिख रहा है. सो 2 and 11. सो हम सबको पता है 2 5s are 10 होता है एंड 2 6s are 12 होता है. तो 2 5s are 10 looks sensible. तो अब डायरेक्टली पता है मैं क्या ट्राई करूंगा? 282 with 5. अच्छा है ना शॉर्टकट? चलो ट्राई करते हैं. 5 5s are 25, 5 2s are 10, 12, 5 8s are 40 plus 1, 41, 5 2s are 10 plus 4, 14. ओ बड़ा हो गया. सो एक स्टेप पीछे ले लेते हैं. 2 8 2 4 into 4, 4 4s are 16, 4 2s are 8 plus 1 9, 4 8s are 32 and 4 2s are 8, 9 10 11. Are we in success? Yes, we are. So we should use 4, 4, and we have double 1 2 9 6 and addition of 4. So what do we have here is 2 8 2 8. A fill up to think. The same fill up will be added. Here we'll do subtraction. The subtraction will be done on the same lines जैसे हमने पहले किया था. 9 will become 8 and then this will become 10, but it will become 9 because it has to lend further. So 10 में से 6 जाएगा 4, 9 में से 9 जाएगा 0, 8 में से 2 जाएगा 6 and the zeros drop down. Isn't it amazing? कि तो नंबर बड़े ही होते जा रहे हैं. So I request you to take a pause, try this method from the beginning and also find at least 2 more digits in this. और जैसे ही वो मिल जाए आंसर चैट में पोस्ट कर दो. तो अब मैं एक आपको इसका एग्जैक्ट आंसर बता देता हूं till a few more decimals. You and I can use Wikipedia and find a lot of values, the digits after 1.414.
So apparently 1.4 1.4 2 1 3 5 6 2 3 7 3 095 04880 16887 24209. दिस इज ऑल लॉन्ग डिविजन. आप और मैं भी लॉन्ग डिवीजन अगर करते रहेंगे तो ऐसे और वैल्यूज दैट इज द डिजिट्स हमें मिलते जाएंगे. एंड डू यू सी देम स्टॉपिंग एनी टाइम? आई डोंट, एंड आई एम श्योर यू आल्सो डोंट. So if these digits are not stopping, so can we express them in the form of a ratio? Think, or as a rational number, which is p by q. और अगर आंसर आपको क्लिक हो जाए तो चैट में कमेंट्स में डाल दो. Now, let's look at some other irrational numbers as well. You can see root 3 on the screen. And if you also observe that it is also like root 2, going on and on and on and on and on. Can we try one more? Let's find root 5. Yes, you can see root 5 on the screen as well. And if you observe the values for root 2, root 3, root 5, we cannot express them as p by q, as ratios or as rational numbers. That's why they come under the category of irrational numbers. तो चलो रूट 2 पे ध्यान दिया हमने, तो उसके जो डेसिमल एक्सपेंशन है उसको देख के मुझे लग रहा है इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि वो स्टॉप नहीं हो रहा है. एंड इट इज ऑल्सो नॉन रेकरिंग, इट मीन्स रिपीट भी नहीं हो रहा है. सो जब रुकेगा भी नहीं, रिपीट भी नहीं होगा, तो उसको बोलते हैं irrational numbers. The numbers which do not stop, do not repeat, are known as irrational numbers and represented by the symbol q dash. Let's see some more. You and I have heard of something called as pi. किसी को इसकी ओरिजिनलिटी के बारे में पता है क्या? सोचते हैं पाई कैसे पैदा हुआ. पाई pi is known as a mathematical constant. और आपके कुछ टीचर्स ने इसको आपको छोटे स्टैंडर्ड्स में यूज करने को भी सिखाया था. लाइक पाई इज इक्वल्स टू 22/7 और पाई इज इक्वल्स टू 3.14. लेट्स अंडरस्टैंड कि ये ट्रू है कि फॉल्स है. नाउ व्हाट इज पाई? पाई इज अ डिस्कवरी आफ्टर ratios of circumference and diameters of several circles. छोटे, बड़े, बहुत छोटे बनाए गए और उनका बार बार सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो कंपेयर किया गया. तो हर बार क्या पता चला कि हर बार एक ही आंसर मिलता है, और उस आंसर को उन्होंने, क्योंकि वो बार बार सेम आंसर मिलता था, सो इट वाज कंसिडर्ड टू बी एज कांस्टेंट, सेम ऑलवेज. सो व्हाट वाज द आंसर दैट दे फाउंड? They found it as pi. And let's find the original value of pi. I gave you a minute. अगर आपको लगता है, आपको पता है, तो कमेंट्स में डाल दो. As you can see on the screen, we have the value of pi up to so many decimal places. Isn't it surprising कि इतने सारे decimal places, पर हमारी टीचर तो सिर्फ 22/7 बोलती है, 3.14. So let me clear this. Pi is an irrational number. Pi is an irrational number. तो अब सवाल आता है, is it true pi or no? So it is not true pi. It is approximate rational value of pi. क्या है वो? approximate. So मैंने उसको approximate बोला, तो वो true value नहीं है. True value आपके सामने है in this blue. तो हमने ये शॉर्टकट वाले वैल्यूज क्यों बनाए? फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन.
रोज रोज जब हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम इतनी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू नहीं यूज कर सकते, तो हम कौन सी यूज करते हैं, 22/7 और 3.14, बिकॉज दैट इज फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन। अब आज के लिए मैं आपको एक फूड फॉर थॉट देना चाहता हूँ। आप क्या पता कर सकते हैं कि पाई के ऊपर इंडियंस के पास कौन से वर्ल्ड रिकॉर्ड और गिनीज रिकॉर्ड है? ओके, सो हमने कौन से इरेशनल नंबर्स देखे, √2, √5, √3, पाई, ये हमने इरेशनल नंबर्स देखे। नाउ द चैलेंज दैट यू एंड आई विल बी फेसिंग एंड ओवरकमिंग इज टू ड्रॉ irrational numbers on the number line. तो चलो ये चैलेंज आज हम पूरा करते हैं हमारे एक्सरसाइज 1.4 में। Here comes our first question. Okay, the first question is the number √2 is shown on the number line. देखिए उन्होंने कैसे दिखाया हुआ है ऑलरेडी, if you see √2 is already on the number line. So let's take a recap कि ये √2 आया कैसे होगा। अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने एक राइट ट्रायंगल बनाया था, याद है, टेकिंग 1 यूनिट एंड 1 यूनिट। आई एम श्योर आपको याद आ रहा होगा। अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने एक राइट ट्रायंगल बनाया था विद 1 यूनिट एंड 1 यूनिट, एंड जब हमने उसकी हाइपोटेन्यूज को मेजर किया था तो वो कितनी मिली थी, वो मिली थी हमको √2। दिस वाज द √2 यूनिट, एंड वेरी सिंपली व्हाट वी हैव डन इज ओ से ए तक मेजर किया एंड उस मेजर को हम नीचे नंबर लाइन पे लेके गए एंड वी गॉट √2 ऑन द नंबर लाइन। सो ये है थोड़ा बैकग्राउंड कि √2 कैसे आया। अब हमारा चैलेंज है टू रीच √3। सो द प्रोसेस इज सेम, √2 is one side of the right triangle and you have 1 unit of QR. आपके पास क्या है, 1 unit of QR. The point Q on the number line shows the number dash. आप और मैं ध्यान से देख सकते हैं, it shows √2. The first fill up is covered. फिर they say OQ square. OQ का वैल्यू हमने देखो अभी पता किया था ना, OQ, yes, हमने जो पता किया तो एकदम करेक्ट है, √2 square. एंड उसके बाद QR का वैल्यू इज 1 स्क्वायर। सो √2 square is just 2, 1 square is 1, 2 plus 1 becomes 3, 2 plus 1 becomes 3। नाउ देखिए जो हमें मिला है वो है क्या, OR का स्क्वायर मिला है, हमें OR नहीं मिला, हमें क्या मिला है, OR का स्क्वायर 3। सो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट। थोड़ा मन में भी कर सकते हैं, तो अगर हम टेकिंग स्क्वायर रूट करेंगे तो आपको पता है लेफ्ट साइड से स्क्वायर रूट साइन, लेफ्ट साइड से स्क्वायर रूट साइन, स्क्वायर रूट कट जाएगा तो ये बचेगा सिर्फ OR, एंड राइट साइड पे जो √3 है वो बन जाएगा √3 यूनिट्स। हाउ सिंपल इज दैट। तो अगर OR is going to represent √3 units, so if I just use my compass keeping it at O, my pencil keeping it on R, I got the measurement of √3 and I just have to cut an arc on the number line from OR towards the number line and I get point C. Point C is now going to show √3 on the number line. Very simple. If there is a confusion, वीडियो को पॉज करें, पीछे लें एंड फिर से देख लें। ओके, सो किड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या करने बोल रहा है, शो √5 ऑन द नंबर लाइन। सो कभी भी √5 अगर बनाना हो, सो हमें √5 से एक पहले कौन सा रूट आता है, किसी को पता है? अगर हमें नंबर लाइन बोल रही है √5 बनाओ, तो √5 से पहले प्रीडिसेसर कौन है, उसके पहले आता है √4। किसी को पता है √4 क्या होता है? √4 is nothing but just a 2. So let's see what is happening. We'll take 1 and 2 and 3 on the number line and -1. अब एक चीज बहुत ध्यान रखनी है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट, द डिस्टेंस बिटवीन 0 to -1, 0 to 1, 1 to 2 and 2 to 3 should all be same. The distance between 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3 and 0 to -1 should all be same. I hope आपको ये बात समझ में आ रही। Now, what are we going to do? We are going to construct a right triangle for our understanding.
नाउ मैंने 0 to 2 एक साइड ले लिया. I'll draw a perpendicular on 2. Think of how big would that be? Think. अगर आपको लग रहा है आपने सही सोचा है तो कमेंट्स में पॉज करके लिख दो. I'm sure the answer is 1 unit. Okay, the answer would be 1 unit. So let's name it. This is 0, this is A, and this is B. So what we have is a right triangle OAB. तो चलो इसके ऊपर थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं. In right angled triangle OAB, hypotenuse square, which is written as is equals to side 1 square plus side 2 square, and we achieve this by what is called as Pythagoras theorem. Now hypotenuse is OB, side 1 is OA, and the other one is AB. Now हमें दो पता है, जो दो पता है हम वो लिख देंगे. We know OA का वैल्यू it is 2 units. We know AB का वैल्यू it is 1 unit. हमने खुद सोचा था. OB unknown. 4 plus 1. So OB square is 5. But you know we need OB. So what we do is taking square root of both sides. So if I'm going to take square root, I need to have a square root sign on both sides. So what you have is the OB square, what you have is a 5. Now left side पे OB square and OB. Left side पे OB square and square root will convert into just OB, and right side will be root 5 units. Yeah, we have just achieved root 5 on the triangle. OB is my root 5. So अगर ये triangle पे achieve हो गया है, which is the hypotenuse position, तो अब मुझे इसको लाना है on the number line. As simple as that. Same, keeping O as the center, pencil on B, OB as the radius, and we do a marking. Arc. Compass, pencil, and an arc. So now let me give it C. Okay? Point C represents root 5 on the number line. As simple as that. Isn't it easy? Yes, it is. With more practice, it will become even more easier. Let's look at the last question of the entire chapter, और फिर हमारा ये chapter खत्म. What is it asking? It's asking to make root 7 on the number line. So अगर मुझे root 7 चाहिए, so मुझे predecessor to root 7 क्या होता है? root 6 वो भी चाहिए. root 6 डायरेक्टली नहीं मिलता. root 6 के लिए क्या चाहिए? root 5. ये शायद हमने अभी बनाया था, बराबर ना? So root 7 तक पहुंचने के लिए we have a journey to make. So let's begin the journey. First, we draw the number line, marking 0, -1, 1, 2, 3. एक बात का बहुत ध्यान रखना है that the distance between all these is equal. Ensure that अगर आपने 0 to 1 सेंटीमीटर लिया है तो सारे 1 सेंटीमीटर है, अगर 1 इंच लिया है तो सारे 1 इंच है, और if there is any other measurement from 0 to 1, it is same across the number line. Now अभी हमने देखा था how do we draw root 5 on the number line. It was pretty easy. We just did a right triangle with 2 units and 1 unit, 2 units and 1 unit, and we were successful in achieving root 5. So this is O, this is A, that's 90 degree, and that's B. And what we did with this was root 5, calculations done previously. So what you did is this, and this was given as C. Point C is where is your root 5. Now the process repeats.
We'll go at point C, we'll construct a perpendicular of 1 unit, where on root 5. And from there, we'll come towards D. Let's mark this as point D. Now, if you do the Pythagoras and try, you will find that OD is your root 6. OD is equals to root 6. ये हमें मिलेगा by Pythagoras. करके देखना by Pythagoras theorem. So if that is root 6, then if I measure from O to D with my pencil and use my compass and come down, and I'm sure I'm getting a point E, and that point E is my root 6 on the number line. But the process doesn't stop here, because हमारा क्वेश्चन क्या मांग रहा है हमसे? हमारा क्वेश्चन हमसे मांग रहा है कि give me root 7. So अब root 6 पे हम बनाएंगे एक 1 यूनिट का परपेंडिकुलर, and we'll join that same from O, and we'll give that an alphabet F. अब ये जो OF है ना, again you use a Pythagoras, you will get to know that OF is root 7. And if OF is root 7, compass on O, pencil on F, measure, cut an arc, put G. And this is your root 7 on the number line. So point G represents root 7 on the number line. Wasn't that easy? तो हमें क्या याद रखना है? हमें ये याद रखना है, हमसे जो भी रूट मांगा जाएगा, हमें उसके एक स्टेप पहले वाला रूट पता होना चाहिए. और अगर वो नहीं पता, तो वो हम कैसे करते हैं? हमारी मेहनत से ड्रॉ. फॉर एग्जाम्पल, हमें रूट 4 सबसे इजीली पता है, जो है 2, और उसने हमें हेल्प किया टू अचीव रूट 5, एंड देन रूट 5 हेल्प टू गेट रूट 6, रूट 6 हेल्प रूट 7. 2 पे जब 1 यूनिट बनाया, 2 पे जब 1 यूनिट बनाया, मतलब रूट 4 पे 1 यूनिट बनाया, रूट 5 मिला. रूट 5 पे 1 यूनिट, रूट 6 मिला. रूट 6 पे 1 यूनिट, रूट 7 मिला. And that's where we complete the chapter Rational and Irrational Number. Stay tuned. Parallel Lines is coming very soon. The chapter 2. Happy learning as always. Stay safe. Bye bye.